चापरमुख के विशिष्ट समाज सेवी जशवीर सिंह की पुण्यतिथि मनी। चापरमुख सिंह गांव निवासी चापरमुख सिंह गांव स्थित त्रिजय मंडित गुरुद्वारा माताजी प्रबंधन कमेटी के 13 वर्षों तक अध्यक्ष पद अलंकृत करने वाले विशिष्ट समाज सेवी दिवंगत सरदार जशवीर सिंह की आज प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने के साथ ही गुरुद्वारा माताजी में गत 18 जनवरी से चल रहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सहेज पाठ का समापन होने के साथ ही आज प्रातः आषाढ़ी वार व कीर्तन और दोपहर को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सहेज पाठ का समापन होने के साथ ही विशिष्ट समाज कर्मी एलपी सिंह के अध्यक्षता में अनुष्ठित स्मृति चारण सभा में ज्ञानियों द्वारा सबद कीर्तन और जसप्रीत कौर द्वारा कविता पाठ अरदास के पश्चात गुरु का लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर दिवंगत सरदार जशवीर सिंह की पत्नी, 2 पुत्र, पुत्रवधू, परिजन और चापरमुख गुरुद्वारा माताजी प्रबंधन कमेटी, चापरमुख शिव युवा संघ, रोहा आंचलिक आंसू के प्रतिनिधि सहित चापरमुख लंका बरकला रोहा से आए सैकड़ों पुरुष, महिला, युवक युवतियां भक्तों ने गुरुद्वारा माताजी के मंदिर में मत्था टेका। समाजकर्मी तथा ये बुरंजी प्रसिद्ध द्वितीय ऐतिहासिक गुरुद्वारा माताजी प्राक्तन सभापति सरदार जशवीर सिंह जी प्रथम मृत्युबार्षिकी तेखेतर परियाले तेखेतर मृत्युबार्षिकीটো आयोजन करिছে। এই উদ্দেশ্যৰে যোৱা 18 তাৰিখৰ পৰা গুৰু গ্ৰন্থ সাহেবৰ সহেজ পাঠ আৰম্ভ হৈছিল। আজি তাৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিছে। পুৱাবেলা আষাঢ়ী বাৰ কৰি তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। দুপৰীয়া 11:30 বজাৰ পৰা এখন ধৰ্মীয় দিৱান আৰম্ভ হৈছিল, য'ত তেখেতলৈ বিভিন্নজনে কোনোবাই ভজন, কোনোবাই কবিতা, কোনোবাই শবদৰে তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। লগতে আমিও তেখেতৰ যি এই গুৰুদ্বাৰটোৰ লগত সম্পৰ্ক, সমাজখনৰ লগত সম্পৰ্ক, স্থানীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সম্পৰ্ক, সেই বিষয়ে আমি ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে দুআষাৰ কৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেওঁ এৰি থৈ যোৱা পৰিয়ালটো, তেওঁ এৰি থৈ যোৱা সমাজখনে তেওঁৰ যি আদৰ্শ, তেওঁৰ যি দৰ্শন, তেওঁৰ যি ভাৱধাৰা আছিল সেইমতে তেওঁলোকে চলিব পাৰিব। আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকক আমি লগ পাই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে এই দুখবোৰ পতলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰাৰ লগতে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ পিতৃ, তেখেতৰ ৱাইফক কৈছোঁ, আপোনাৰ স্বামীয়ে, বোৱাৰীক কৈছোঁ, আপোনাৰ শ্বশুৰে, ল'ৰাকেইজনক কৈছোঁ, আপোনাৰ দেউতাকে যি ভাৱধাৰাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল, নিশ্চয় আপোনালোকে সেইবোৰ কথা শুনিছে, তেওঁৰ মুখেৰে শুনিছে, দেখিছেও। গতিকে সেই ৰাস্তাতে আপোনালোকে গৈ সমাজখনৰ কাৰণে কিবা যদি পাৰে ভাল কাম কৰি যাব। रोहा से सोयल खेतान की रिपोर्ट, IND 365।